हाँ ओडिया जाऊँ पहले तारीख ओडिया जाऊँ ओडिया तो जाऊँ गोटे कही जानी कि छिड़ा ना 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 आउटपुट नहीं ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଡିଟୋରିୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବିଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ନବୀନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ AK ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପୁରସ୍କୃତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। विमान बंदरରୁ नवीन निवास पर्यंत एक विराट शोभायात्रा मुख्यमंत्री को मंगलवार दिन पाछटी आनिबार मध्य कार्यक्रम ग्रहण करा जायछि। आ किछि समय मध्यरे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पाइबे वर्षर कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आज नुआ दिल्ली रे सुप्रीम कोर्ट रो पूर्वतन प्रधान विचारपति जस्टिस NV रमन्ना मुख्यमंत्री को एही पुरस्कार प्रदान करिवे। एथिपाई भारत अंतर्जातीय केन्द्रर ऑडिटोरियम रे एक स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन करा जायछि। नुआ दिल्ली रे जीवनव्यापी साधनार पुरस्कार पाइबे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। विकासमूलक कार्य बलिष्ठ नेतृत्व पई एही सम्मान प्रदान कराजिबो। कैपिटल फाउंडेशन सोसाइटी पक्षरु मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को सम्मानित कराजिबो। किछि समय परे पुरस्कार प्रदान करिवे पूर्वतन प्रधान विचारपति मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान करिवे। आज नुआ दिल्ली रे सुप्रीम कोर्ट रो पूर्वतन प्रधान विचारपति जस्टिस NV रमन्ना ए पुरस्कार प्रदान करिवार कार्यक्रम रहिछि। अंतर्जातीय केन्द्रर ऑडिटोरियम रे एक स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन करा जायछि। उल्लेखनीय विकास the Honorable Chief Minister of Odisha receiving the Lifetime Achievement Award. One thing about Mr. Patnaik is that he is very punctual and has always been a source of strength. He was the chief guest of Capital Foundation in 2014, and many of the recipients received an award from him, including the Governor of the Reserve Bank of India. I am very pleased that we have 2 persons who were the awardees and were selected, but because of some colonial rule said we cannot accept the award because we are the senior officials of the Government of India. I am very pleased that one of them is still sitting with us, is Mr. Tuhin Patnaik, Mr. Tuhin Pandey, the Secretary Ministry of Finance. I am obliged that he came to participate in this function. We are just waiting for another 1 minute for Chief Justice Ramanna to come. We had put the Chief Justice because originally we had planned the function for 22nd August. You all must have been aware that we have been sending you one after another reminder and then also sending you the copies of the resumes. You see, where I left was that I want each awardee to recommend 4 or 5 names for the awards. You see, they are all very distinctive people and deserve far more greater recognition than this. As I said, if one were to choose for Bharat Ratna, the today's Lifetime Achievement Award man is the best suited for it. And second,
we are very privileged to have a class of members. You might have seen in the list we circulate that we have the top medical officers from Army, Major Generals, Lieutenant Generals, Rear Admirals, Admirals, Air Marshals, and they are all distinctive. They don't get awards from the Government of India in terms of gallantry awards which they announce. But these are the people who really deserve, so that's why you find in every booklet we choose one or the other man from the Army Medical Corps, either from different parts of the country. So we have chosen this time also, we have created a history of giving a couple who are both distinguished. One was selected earlier. Please stand and welcome Chief Justice Ramana. बैठ जाओ भाई A very warm good afternoon to all. On behalf of Capital Foundation Society, I, Dr. Charu Mathur, welcome you to the Capital Foundation Annual Lecture and Awards Function. We extend a cordial welcome to our guest, former Chief Justice N.V. Ramana, Honorable former Chief Justice of India. He was previously a judge of the Supreme Court of India, Chief Justice of Delhi High Court, and Acting Chief Justice of Andhra Pradesh High Court. He has also been the President of the Andhra Pradesh Judicial Academy. We are pleased to confer Lifetime Achievement Award to Shri Naveen Patnaik, Honorable Chief Minister of Odisha. He has not only been the longest serving Chief Minister of Odisha, but also one of the longest serving Chief Ministers of any Indian state, holding the prestigious post for more than 2 decades. With his recent programs like Make in Odisha Conclave, he has definitely showcased Odisha's immense potential for conducive business environment. Odisha has emerged as a sports hub under his leadership, from strengthening livelihoods and food security to focus on marginalized communities and women. All sectors have boomed and prospered under him. We would further express gratitude and would heartily welcome the heart and soul of Capital Foundation Society, our respected chairman, Mr. Justice A.K. Patnaik. He is an eminent jurist, former judge of Supreme Court of India. He has also served as Chief Justice of Chhattisgarh High Court, Madhya Pradesh High Court. His area of specialization has been commercial and constitutional law. He was conferred with the degree of Doctor of Law by Utkal University. We are humbled that with his dedication and devotion, Capital Foundation Society has progressed leaps and bounds. Thank you, sir. I will fail in my duties if I do not express my indebtedness to Justice A.K. Sikri, a jurist par excellence. He has served as Judge of Supreme Court of India, Chief Justice of Punjab and Haryana High Court. He is an international judge at Singapore International Commercial Court. He is also the chairperson of News Broadcasting Standards Authority. Thank you, sir, for always encouraging us, being our mentor and guide, and motivating us in our endeavors. Last but not the least,
we would warmly acknowledge and appreciate the sincere efforts of Dr. Vinod Sethi, who has been at the helm of all the functions, steering them through successfully since past 35 years. I would further like to introduce our benevolent charitable NGO Capital Foundation, which has been taking baby steps as well as leaps at the same time in areas of democratic governance, electoral and judicial reforms, criminal justice, impact on economy, capital market, amongst the few. As he just suggested, parliamentarians, civil servants, judges, diplomats have all come together and exchanged their ideas at this platform. This is something that makes Capital Foundation different from other public forums. Now, I would request Justice Pramod Kohli to welcome Chief Justice Ramana. Justice Pramod Kohli. I will request Dr. P.N. Arora to welcome the Chief Minister, Mr. Naveen Patnaik. Mr. A.K. Ganguly to welcome Justice A.K. Patnaik. Mr. Ashok K. Parija to welcome Justice A.K. Sikri. He is the Advocate General of Odisha. I would now request Mr. Hariom Jindal to welcome Dr. Vinod Sethi. Thank you, everyone. Now I would request Justice A.K. Patnaik to deliver the welcome note. A very good morning to you all. In the Indian judicial system, the Chief Justice of India is the busiest functionary. We tried to get him in the month of August 2022 for this function, but he just could not find the time and regretted. But he thought, as soon as he retires, we must catch him. And we have been able to get him for this function. I welcome him to this function today. Chief Minister of Odisha, Mr. Naveen Patnaik, is very shy to receive awards. He always says, and makes his public statements also, my work will show what I am. He does not propagate also for his work at time of election. He says, my work is what I am. It's very difficult to get him
from Odisha because he is all the time busy in Odisha attending to the problems of the Odisha state. Somehow we have been able to get him, and that too not because of this award, but because he has lined up other functions here, as came to know from the papers, investment meetings for the state of Odisha. Thank you. We welcome him, Mr. Patnaik. All the other awardees who have come today with their family members, they are also very busy people. And they have taken pains to come all the way from different places of India to receive the national awards. Not only they have come, their family members have come at their own cost and expenses. It's commendable. We welcome you all to this function. Other guests who are present here, including those from media, and the members of the Capital Foundation Society, I welcome them here because Sunday morning, nobody wants to spare for any other work than the family members. They want to spend the time with their children, grandchildren, and yet they have sacrificed that particular family life and come here to attend to this function. I welcome them all. These days, as I read the newspapers and I watch the televisions, without media coverage of any program, nothing gets known to people. They are so busy. Thank you very much for the guests from the media who have made it here. I welcome you all for this function today. Now I would request Dr. Vinod Sethi to talk about the people who have felicitations for those who have instituted the awards. Friends, as I said, we do not have any grants from any source, but then for last couple of years, we have started persuading our old friends why not to institute an award, and very pleased to felicitate them and welcome them for having instituted. We have Mrs. Zena Sorabji here. In fact, it is Zia Sorabji, the daughter of Mrs. Sorabji, whom we had selected long back for a Capital Foundation award, but she couldn't come. We request Mrs. Zena Sorabji. कटक पॉक्सो कोर्ट विचारपति सुभाष बिहारी संदेहजनक मृत्यु घटना आसी नुआ मोड़। सुभाष को हत्या करा जायछि बोली कांदी कांदी अभियोग करिसेंती मां तुलसी और सान भाई। हत्या अभियोग ने कटक मरकतनगर थाना रे एतला देइछंती तुलसी। हत्या पछरे पारिवारिक विवाद किंबा धन संपत्ति कारण होइथाई पारे बोली संदेह करुछंती सुभाष को मां। जाजपुर जिला भुवनेश्वर गां विष्णुचरण बिहारी और तुलसी बिहारी बड़ पुओ सुभाष। जाजपुर कलश ढियो गां श्रीवत्स रायंकर झियो अपराजिता विवाह करथिले सुभाष। मरकतनगर थाना रे मां तुलसी दायर करिथिबा एतलारे दर्शा जायछि जे विवाहर 3 वर्ष पर्यंत सुभाष और पत्नी अपराजिता घर सह सुसंपर्क रखिथिले, तापरे रखिले नाही। तुलसी अभियोग करिसेंती जे सुभाषकर पत्नी और मझिया ससुरंकर पुओ सर्वजित मिसी सुभाष को मानसिक निर्यातना देउथिले। आत्महत्या नुहे, पत्नी अपराजिता और शालक सर्वजित मिसी सुभाष को मारी देइछंती बोली अभियोग करिसेंती तुलसी। मृतदेहर विभिन्न स्थान में दाग रहिबा एवं गाँ को मृतदेह न पठाइबा घटना हत्या संदेह को अधिक घनीभूत करिछि बोली एतलारे दर्शाइछंती तुलसी। मरकतनगर थाना अधिकारी कहिछंती पूर्वरु अपमृत्यु मामला सहित एही एतला मिसाई तदंत कराजिबो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसिबा परे तदंत आगेइबो।
Ma'am, please. Dr. Narendra Singh could not come. He is the chairman of the Word College and runs a medical college and an engineering college and a hospital in Jijjar. He has authorized one Mr. J.C. Pasi to receive an award on his behalf. Chief Justice, Who's coming? he is coming, Mr. Pasi. I'm the dean of his college. Mr. Pasi is the dean in the Word Medical College in Haryana. Next you will receive. We also had a huge chapter in Andhra Pradesh, and we received an award on the name of Mr. N. Narottam Reddy, who was a great journalist, member of parliament, and was a social activist. His family instituted an award on his name, and I would request Dr. Charu Mathur to receive on award on Hirani Rao's award. Another man who instituted an award is not here again. You see, none of those who instituted the award said that we want any recognition for it. But we have a tradition to felicitate them in the next function. We had a unique contribution from one of the very old members of the Capital Foundation called C.S. Vaidyanathan. He is a senior advocate who started his practice with K.K. Venugopal's father, and then K.K. Venugopal. Now he is a senior advocate, a lover of Carnatic music, and has appeared in several cases. I requested his son to come and take it. He said, no, none from my family should do. I don't want. But what he has instituted is a new venture, saying the award on the name of his old friend, Dr. R.K. Jain, who was the president of the Supreme Court Bar Association for 4 or 5 years, and there was an eminent lawyer, and he said it should be given to a person who specializes in criminal law. And that is, Harish is there? No. That is another award which has been instituted. Irshad, you can accept on his behalf and we'll pass it on to him. Irshad, go and accept. Why I call these Irshad and Charu? Because Charu has been on training of taking over Capital Foundation from me. She is associated with Capital Foundation when she was about 13 years, and she used to distribute pamphlets. And for last so many years, I have been trying to say that you should do and take over, because I want the younger lot to accept it and take over these activities. These are the awards. Thank you. Now, Dr. Charubati. The first awardee must come and sit here. Now, I would request Justice A.K. Patnaik to present the award to Shri Naveen Patnaik. It's the Lifetime Achievement Award to Honorable Chief Minister of Odisha. Okay. Citation. You give me that. Give me that. Give me that. No, she made a mistake. The award will be given by the ex-Chief Justice, Justice Ramana. Let them kindly sit down now. Right, please sit down now.
I'll have to speak why we are giving this award. Now, it is my privilege to speak about the achievements of Mr. Naveen Patnaik as the Chief Minister of Odisha. In 1962, when his father, late Biju Patnaik, was the Chief Minister of Odisha, soon after the elections, he addressed a gathering of all government officials of the state of Odisha. And that gathering, and that is a very quoted speech of Mr. Biju Patnaik, he said, he told the officers of the state government, be loyal not to me, be loyal not to my party, be loyal not to my government, but be loyal to the destinies of the state of Odisha. It so happened that after Biju Patnaik expired, Mr. Naveen Patnaik became the Chief Minister of Odisha in the year 2000. And he took up that legacy of Biju Patnaik. Mind you, Mr. Biju Patnaik never initiated Mr. Naveen Patnaik into politics. He kept them out. But to his credit, I must say, he came as a novice to politics, that is in 1999. First joined the NDA government here, then went back to the state and started the journey of transformation in Odisha. And why, I'll tell you now. First of all, he ensured that the police administration was not being influenced by politicians. That's a great thing. Everywhere in the country you find police administration is totally under the control of politicians. He never allowed it. He had come there soon after the super cyclone in 2099. And cyclones and floods were a disaster in Odisha. He put into place a very effective disaster management system and ensured his target was zero casualty in each of these calamities. He empowered women in the state of Odisha. Biju Patnaik was the first person who provided for reservation for women in Odisha. If you go to Cuttack, you will find many of the traffic stands are full of girl police officials doing their work. What Mr. Naveen Patnaik did, he promoted self-help women groups all over Odisha in the rural areas and empowered them with all kinds of concessions from the government. And when I traveled across the mining districts in Odisha in course of my duties entrusted me by the Supreme Court, I find the self-help women groups are doing well, and women have become aspirational, absolutely aspirational, doing very well. They don't want a job. They want to earn money and support the family. And what is most important, he is the Chief Minister who has ensured that 33% of the elected posts, candidates, are for women. Odisha was a food deficit state. And he has ensured a transition from food dispute state to a food surplus. And the state is contributing to the public distribution system of the country. Under the Kalia scheme, which is a Kushak assistance for livelihood scheme, he devised a scheme by which every farmer is being assisted with some money at the time of harvesting and started sowing, and there to augment their agriculture income. He has started now in Odisha
schemes all over the state, in urban areas and rural areas, of providing pipe drinking water to every household in Odisha. He has ensured education at the school level improves. In every block in Odisha, there is now Adarsh Vidyalaya, a model school. I have gone down and seen them. They are residential school where girls and boys are admitted on the basis of their merit from the area and given the best of education that is available, that teachers get more salary than what our private schools give. Smart health cards have been introduced, which can be used by people to get free health service. And 90% of the population are benefited by them. These are some of the areas, and it's not that I'm saying from newspapers or some articles, or I have gone round 4 districts, Keonjhar, Sundargarh, Mayurbhanj and Jaspur. And I've seen how these schemes are benefiting and improving, reducing poverty at the lowest rural level, and also reducing poverty in the urban areas. Wherever he removes encroachments, the encroachers are provided some dwelling unit somewhere else. This is what he's done. These are all new ideas that he has floated, and he has ensured that money of the state government schemes as well as money sanctioned by the central government schemes are all properly utilized and reaches the beneficiaries. All this is possible if you can set your priorities very clear as a leader of the leader of the government, as the chief minister. If you prioritize your programs for the poorer sections by spending a lot of money in the social sector, this is possible. And above all, Mr. Naveen Patnaik has maintained his personal integrity. It's above board. Credibility, simplicity, and with no sign of arrogance, even though he has been for power for more than 22 years. This is because Capital Founders Society thought that he should be recognized for his distinctive and outstanding leadership qualities. And today, Justice Ramana will be conferring on him the Capital Foundation Lifetime Achievement Award. Now, I would request Justice A.K. Sikri to introduce Chief Justice Ramana. Thank you, and good afternoon to everybody present here. I am asked to introduce Justice Ramana, but I may say I am not here to introduce him. You introduce a person whom people in the audience doesn't know, or they don't know about him. He is a person, I think in this audience, each and every person knows him very well and knows about him very well.
his achievements not only as a judge or Chief Justice of High Courts, but and thereafter as a judge of Supreme Court, but more distinctively achievements as Chief Justice of India are known to everybody, and these are fresh in our mind. Here is a person who has achieved the distinction of people's judge or citizen's judge. Actually, I may say so without going into the details, and the person in the audience, because you are all belong to that group of intelligentsia, would understand what I am saying. He assumed the office of Chief Justice of India in somewhat difficult times, for the Supreme Court at least, as to what had been happening earlier. And the major task or the achievement which I feel is resurrecting the image or enhancing the image of the court as an independent, fearless court who is to give justice to the marginalized section of the society. He fought for civil rights of the people. He fought for rights of the marginalized section of the society. He even fought for the rights of media and journalists. I remember in one of his lectures, he said, responsible governments are required to respect freedom of the press at all times. There is no justification for allowing a sword of Damocles to hang over the press indefinitely. In today's time, these are powerful words, if I may say so. He worked tirelessly, as Justice Patnaik also said. It is difficult to catch a person who is the Chief Justice of this country, India. I have been the judge of Supreme Court. I have seen Chief Justices working. I may only add that I think the workload of the judge of the Supreme Court is maximum when compared to the workload of any judge in any other jurisdiction. And every day you have to work till 10, 10:30 in night. There are no holidays, there are no Saturdays, there are no Sundays. And I know for Justice Ramanna, 10, 10:30 I spoke for myself, and Justice Ramanna was working till late midnight every day. One good thing, in spite of this busy schedule, and I may say so on a personal note, normally when a person becomes Chief Justice, we don't disturb him unnecessarily because we know he is busy, and particularly when you are no more a judge in the Supreme Court. But whenever I would message him, what is the convenient time I can call you, he would not message me back saying at this time you call me, but he would call me back immediately whenever he would get time. And I think this was his approach towards other judges as well. He has made speeches almost every weekend. He was making speeches at one place or the other. Maybe about 20, 30 years ago or earlier, it used to be said that the judges speak through their judgments. Not any longer. Of course, we have to speak through our judgments. These judgments which remain in legal journals, and they are there for posterity as well. But today's judges speak, which they should, through their speeches, other speeches, and their
writings as well. I don't know, I've been reading it, but I have not kept an account of that. But I think there can be few volumes which can be published in the form of speeches of Justice Ramanna, which he gave only as Chief Justice of India. And he touched upon almost every subject. He talked about judicial reforms. He talked on every social issues. As I said, he talked about the justice to marginalized section of the society, justice for women, which is very close to his heart. He spoke without any reservation on all these issues. And administratively as well, his achievements are par excellence. Let me share, and I think everybody knows here, when he assumed the office of Chief Justice of India, for last 16 or 17 months, not even a single appointment was made to the Supreme Court. There were so many vacancies. Within 2 or 3 months of his assumption of his office, 9 persons were elevated as the judges of the Supreme Court. Highest number ever in 1 stroke 9 appointments. But it doesn't rest here. 3 of them women judges. So 1/3 of this, they were women judges. And not only it ends here, one of them is going to be the first woman Chief Justice of India. That's the remarkable achievement. 250 judges appointed in various high courts. Total strength is about 1,000 judges. So 25% of the total strength, judges appointed in a period of 1 year or 14 months. This is by no means a mean achievement. It's a big achievement. And another thing which I would say, because when I was coming, Justice Ramanna was telling me, don't have to speak much. He hinted at me. But in the field of arbitration, where we are striving to have some, India as a hub of international arbitration, he again took a very positive and I would say challenging step by opening a center in Hyderabad. I hope with his wisdom and the kind of committee which he constituted of all persons who have very good experience in mediation, and committee which comprises of persons from all over the world, and they will be able to contribute a lot and make, and I think the day is not far off. Within few years, India would be a destination which will be sought after for the arbitrations. So in almost every kind of field, whether it is law, human rights, marginalized section, justice to them, administrative prowess, he has distinguished himself. So that was the reason he was chosen. As Justice Patnaik said, we wanted him to give this lecture today, and he has been able to get time, of course, after he demitted office, but we are really keen to hear him. Thank you very much. Congratulations, sir. The next recipient is Dr. G. Satish Reddy. He is the Secretary, Department of Defense,
R&D, and Chairman DRDO. He spearheads indigenous development of defense systems and technologies. As the top defense scientist in the country, Dr. Reddy steers the development of major programs on missiles and strategic systems, fighter aircraft and unmanned aerial defense systems, underwater systems, radar systems. A visionary and institution builder, his technology leadership has deeply impacted the development of best-in-class systems for the Indian Air Force. Dr. Reddy's vast scientific and technological contributions have been acknowledged by leading international institutes in the form of many honors and awards. Today, in recognition of his outstanding efforts in the field of sciences, he is being conferred Dr. APJ Abdul Kalam Award. And his award would be received by Mr. Rajendra Reddy. In the distinguished presence of Mr. Naveen Patnaik, Honorable Chief Minister of Odisha. Now I would request Shri Vikas Gupta to please come on the stage to introduce Professor K.K. Agarwal. Namaskar. It is a privilege and honor for me to introduce Professor K.K. Agarwal, presently the Chairman, National Board of Accreditation. He has been my guiding force, he has been my sir, he has shaped my career. Thank you so much, sir. Professor Agarwal obtained his engineering degree from Punjab University and master's degree from Kurukshetra University, scoring first division in both the degrees. He did his PhD from Kurukshetra and became a professor in 1975 at National Institute of Technology, Kurukshetra. Thereafter, कटक पॉक्सो कोर्ट विचारपति सुभाष बिहारी संदेहजनक मृत्यु घटना आसी नुआ मोड़। सुभाष को हत्या करा जायछि बोली कांदी कांदी अभियोग करिसेंती मां तुलसी और सान भाई। हत्या अभियोग ने कटक मरकतनगर थाना रे एतला देइछंती तुलसी। हत्या पछरे पारिवारिक विवाद किंबा धन संपत्ति कारण होइथाई पारे बोली संदेह करुछंती सुभाष को मां। जाजपुर जिला भुवनेश्वर गां विष्णुचरण बिहारी और तुलसी बिहारी बड़ पुओ सुभाष। जाजपुर कलश ढियो गां श्रीवत्स रायंकर झियो अपराजिता विवाह करथिले सुभाष। मरकतनगर थाना रे मां तुलसी दायर करिथिबा एतलारे दर्शा जायछि जे विवाहर 3 वर्ष पर्यंत सुभाष और पत्नी अपराजिता घर सह सुसंपर्क रखिथिले, तापरे रखिले नाही। तुलसी अभियोग करिसेंती जे सुभाषकर पत्नी और मझिया ससुरंकर पुओ सर्वजित मिसी सुभाष को मानसिक निर्यातना देउथिले। आत्महत्या नुहे, पत्नी अपराजिता और शालक सर्वजित मिसी सुभाष को मारी देइछंती बोली अभियोग करिसेंती तुलसी। मृतदेहर विभिन्न स्थान में दाग रहिबा एवं गां को मृतदेह न पठाइबा घटना हत्या संदेह को अधिक घनीभूत करिछि बोली एतलारे दर्शाइछंती तुलसी। मरकतनगर थाना अधिकारी कहिछंती पूर्वरु अपमृत्यु मामला सहित एही एतला मिसाई तदंत कराजिबो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसिबा परे तदंत आगेइबो। आमर मृत विचारपति सारंकर माँ तुलसी मैडम आसी थाना रे गोटे रिपोर्ट करिसेंती आज तांको बहु एवं नमस्कार। राइजिना हिल ने मने पड़ुछि रायरंगपुर। राष्ट्रपति हेबा परे भी भूली नाहाती निजर गाँ को।
आसवा मुस्किल हेउथले भी फोन ने बुझुछंती भलमंद कार्य व्यस्तता भितरे भूली नाहाती निजर गाँ लोक एवं संपर्क को रायसीना हिल्लू व्यस्तबहुल समय मध्य समय बाहर करी निज लोकों सहित फोन ने कथा होइछंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति माटी प्रति मोह और संपर्क प्रति भल पाइबा देखी लोके कहती से होइछंती पीपुल्स प्रेसिडेंट। यह को नहीं आमर आलोचना लोकों राष्ट्रपति गाँ को झुरुछंती द्रौपदी। तो राष्ट्रपति हेबा परे द्रौपदी मुर्मू भूली नाहाती निजर माटी को निजर गाँ को राष्ट्रपति माटी प्रति मोह एवं संपर्क प्रति जो भल पाइबा देखी लोके कहते से होचंती पीपुल्स प्रेसिडेंट कहीं लोक मानकर से भल मंद पचारि बुझिछंती निज संपर्क को फोन करिछंती एवं किभଳି अछंती ताहा मध्य पचारुछंती ता सहित केमती चली चाषबास एवं किभଳି भाबरे भल वर्षा होइछि ना नाही ताहा मध्य लोकंक ठारु पचारि बुझिछंती एथि सहित पिला मानकर केमती स्कूल पाठ पढ़ा चली कहीं आम समस्त जाचे द्रौपदी मुर्मू पाठ पढ़ी स्वावलंबी होगा जो आदर्श एवं अभाव अनटन भितर से पाठ पढ़ी जो संघर्ष निष्ठापर और सफलतार कहानी आम समस्त जाचे सब बड़े पाठ पढ़ा को प्राधान्य दिखती। तो ए क्षेत्र में जिते से फोन करते गाँ लोक तो पाठ पढ़ा केमती चली पिलाने केमती पाठ पढ़ुंट एवं मन लगाई पाठ पढ़े तो से कथा पचारि बुझी राष्ट्रपति। एसत निजर संपर्क को फोन करथिले एवं संपर्क सहित कथा होइथिले राष्ट्रपति भवन आसवाक कहिथिले। ता सहित केवल मयूरभंज नुहे सारा ओडिशावासी उन्नति तांकर दायित्व बोली से कहते एवं जमती मयूरभंज लोके आपण ठारू अनेक आशा रखिछंती जेतेबेले फोन करथिले मयूरभंज तांकर मुना प्रतिहारी से कहथिले कि आपण ठारू अनेक किछि आशा रखिछंती सेतेबेले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहथिले केवल मयूरभंज नुहे पूरा ओडिशार उन्नति पई नजर रखिछि। तो एथिरु निश्चित भाव में स्पष्ट से किभଳି भाव में ओडिशार उन्नति केवल निज माटी नुहे ओडिशार उन्नति को ओडिशार प्रगति को से सब बड़े गुरुत्व दियंती। ता सहित एक कथा मते कहिथिले कि से जदि बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन पुनरुद्धार हेले केमती भल हुंता ए संपर्क में मध्य रेल मंत्री सहित आलोचना करिछि बोली राष्ट्रपति कहछंती। तो निज अंचलर विकास को सब बड़े पूर्व आम देखीचे किभଳି गुरुत्व दे आसुथिले यारि भितर राष्ट्रपति हेबा परे मध्य से किछि भी भूली नाहाती एवं से अंचलर विकास पई से सब बड़े पदक्षेप नियंती बोली कहते। एसत राष्ट्रपति जितेबाला निजर संपर्क को निजर गाँ लोक को फोन करते केबे विश्वास कर कि रायसीना हिलू फोन कॉल आसो ता सहित भल मंद पचारि बुझे जेहेतु आसवा मुस्किल हो पड़ुछि से फोन ने भल मंद पचारि बुझी। एसत जेहेतु गोटे प्रोटोकॉल रही प्रोटोकॉल भितर रहा पड़ुछि एवं निजर मामू माई सहित वार्तालाप करिसेंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं एथर चाषबास कथा पचारि बुझिचंती एवं ता सहित रायसीना हिल राष्ट्रपति भवन को जीवा को मध्य कहिसंती। तो यार भितर स्पष्ट हेउची किभଳି भाबरे तांकर जो सरल जीवन शैली ताहा प्रतिफलित करुछि आम ओडिशा पई निश्चित भाव से होछंती गर्व गौरव एवं तांकर स्कूल जीवन कथा कहतु पॉलिटिकल कैरियर कथा कहतु कि तांकर जीवन शैली लाइफस्टाइल तो यार सब बेले गोटे स्वतंत्र से सब बेले स्वतंत्र देशर प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति तांकु नै सारा ओडिशावासी ओडिशा आज तांकु गर्व करुछि। तो आम जदि द्रौपदी पई तांको स्कूल कॉलेज मध्य गर्वित केवल से पाठ पढ़ा नुहे एवं अनेक किछि करिसंती स्कूल जे तांकर शिक्षक शिक्षयित्री कर्मचारी तांको विषय में अनेक किछि कहिसंती। तो से प्रत्येक छात्र छात्री एवं शिक्षक शिक्षयित्री तांको नै गर्वित एवं से मध्य अन्य मानक पई प्रेरणा। तो जेतेबेले से फोन करथिले निजर संपर्क को तो पाठ पढ़ा पिलांकर केमती चली ताहा पचारि बुझिथिले कहीं बेस परिश्रमी थिले द्रौपदी मुर्मू निजे पढ़िबा सहित अन्य मानक पाठ पढ़ाउथिले काउंसिलर विधायिका मंत्री राज्यपाल आउ एपे राष्ट्रपति समस्तक पई द्रौपदी मुर्मू पलटिछंती प्रेरणार उत्स। जेतिकी मेधावी थिले से सेतिकी परिश्रमी मध्य थिले पाठ पढ़ी स्वावलंबी हेला तांकर आदर्श थिला। तो
ए समय देखिबा कि पाठ पढ़ा को मध्य गुरुत्व देइछंती पिला माने भल पाठ पढ़ंतु मन देई पाठ पढ़ंतु ए कथा मध्य कहिछंती एवं निजर संपर्क को मध्य कहिछंती राष्ट्रपति भवन आसंतु बुली की जानतु जेहेतु प्रोटोकॉल रहिछि से आसी पारु नाहाती किंतु राष्ट्रपति हेबा परे से निजर माटी को निजर गाँ को से भूली पारु नाहाती सेति पई जेहेतु आसीबा मुश्किल होई पड़ुछि से फोन ने गाँ लोकन सहित कथा होइछंती केही भी विश्वास करि पारु नथिले जेतेबेले गाँ रो झियो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति आसन में बसिले हुए तो तांकर गाँ कथा परवर्ती समय हुए तो फोन कर किंतु जेतेबेले फोन कॉल आसिला केही भी समाने विश्वास करि पारु नाहाती कि तांकर राष्ट्रपति फोन आसीची तो समस्त निजको गर्वित मन करुछंती एवं पीपुल्स प्रेसिडेंट लोक मानकर राष्ट्रपति बोली स्थानीय लोके कहउछंती एवं ओडिशा पई गर्व एवं गौरव तो काउंसिलर विधायक मंत्री राज्यपाल होइतिले मध्य आदिवासी विकास पई से निरंतर भाव में प्रयास करथिले सेथुरु केबे भी से ओहरी नथिले एवं राष्ट्रपति हेबा परे भी जेतेबेले से फोन करथिले तो सेमानकर सुख दुख चाष काम केमती चली भल वर्षा होइछि ना नाही तो एथुरु आपण अनुमान करंतु केते सरल केते निष्पाप केते केते आपण देखंतु किभଳି भाबरे जने महिला निजर अंचल प्रति तांकर जो डेडिकेशन तांकर जो कर्तव्य दायित्वबोध से आदौ भूली नाहाती तो राष्ट्रपति हेला परे भी राइस ना हेलु फोन करूछंती एवं भल मंद सुख दुख पचारि बुझुछंती तो यार भितर जेहेतु प्रोटोकॉल रहिछि से आसी पारु नाहाती तो आसिले निश्चित भाव में से खूब शीघ्र आसीबे बोली मध्य कहिछंती जहाको नै कि स्थानीय अंचल लोक माने मध्य बेस गर्वित बोली प्रतिक्रिया रे कहिछंती। तो राष्ट्रपति देशर प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति आमे तांकु नै गर्वित एवं पीपुल्स प्रेसिडेंट जेबले तबले भल मंद पचारि बुझिछंती आमे ए संपर्क अधिक आलोचना करिबा राष्ट्रपति हेबा परे भी निज गाँ को भूली नाहाती ए संपर्क अधिक आलोचना करिबा को डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र अछंती समाजसेवी एवं डॉक्टर शिरीष चंद्र जेना अछंती अवसरप्राप्त अध्यापक आपण उभय को स्वागत करू आलोचना को डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र आपण ठर आलोचना आरंभ करने को चाहिए देशर प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति जहाँ को लेकिन आज आम गर्व करुच्ची सारा ओडिशावासी आज आम गर्वित किंतु आपण देखंतु राष्ट्रपति हेबा परे भी राइसिना हेलु से फोन करुछंती जेहेतु गोटे प्रोटोकॉल रही आसी पारु नाहाती किंतु फोन करुछंती भल मद पचारि बुझुछंती केमती देखुछंती आपण आज्ञा धन्यवाद देखु सी दीर्घ दिन आम सागर कम मुझे कम करी मो बड़ भौणी सी दीर्घ दिन कम करने भितर मुझे बहुत भल गुण लक्षण एवं पाखे बहुत शिक्षा पाखे देखीचु माने जनता सेवा भगवान सेवा बोली सी भावती सी जो आध्यात्मिकवादी अच्छा धर्म को बहुत विश्वास करती भगवान को विश्वास करती तो जनता जनार्दन को सेवारे से बहुत समय गताती विशेषकर ये जो कथा आपण कहले से शिक्षा और स्वास्थ्य ये दुईटा उपरे जेते दिन से राजनीति क्षेत्र थिले मध्य सबु क्षेत्र सबु बेले प्रयास करचंती शिक्षा स्वास्थ्यर उन्नति करिया पई तांकर कैरियर भितरे जेते से ए अवस्था हैला निजे मध्य गोटे स्कूल जोटा SLS ना रे एक शिक्षानुष्ठान गढ़ी की से निजे मध्य से शिक्षादान दउतले आज भी मध्य तार भल मंद विचार निजे मध्य ताको बुझाबुझी करती पिला केमती रही केमती पढ़ुंट तांको सुख दुख इत्यादि इत्यादि कथा बुझती एवं विभिन्न कथारे लोकंको सहित से रहिया पाई चेष्टा कर साधारण जनता जितेबाला से काउंसिलर थिले मध्य जमती थिले सी MLA हेले मध्य सेमती थिले तापर जिलार सभापति मध्य से किसी दिन थिले आमे संगरे एपट मु थिली सेपट से थिले दुई जन संगरे मध्य काम आमे करथिलु सेतबेले मध्य सेमती थिले तापर से गवर्नर की गले सेमती थिले एवं गवर्नर पर आज राष्ट्रपति हेला पर मध्य से भलिया साधारण जनता सहित जो बड़ी संपर्क थिला आत्मीयता मान सागर जो जमीक संपर्क थिला से संपर्क अच्छी तांको पाखरे उच्च नीच भेद भाव कौन पार्टी फिलिंग्स ए सब कौन ना समस्त जनता समस्त लोकं को से श्रद्धा करती भल पाती आत्मीयता अच्छी आदर अच्छी तेणु तांकर ये सब गुण समस्त को बहुत आकृष्ट करने बहु कथार अनुप्राणित होती प्रति आम भक्ति श्रद्धा सब कथा बहुत मात्रा बहुत दिन बढ़ी था सब बढ़ी आसता है बहुत शिखिबार गुण अच्छी
जो कौ कथा किछि कथा अछि गोटे पहाड़ रे जेता नुआ नुआ से हेले एमएलए हेले गोटे पहाड़ी अंचल रे गोटे जगार किसी लोकंर अवस्था बहुत शोचनीय थिला से पानी पानी पाउ नथिले रास्ता घाटर भी सुविधा नथिला सेठी किसी लोक एक कथा कहला परे से चाली चाली से पहाड़ को अतिक्रांत कर से लोकंग पाखरे जाके अनुभूति आपण जेंती डॉक्टर सही दिन रो तांकर महानता तांकर लोकप्रियता भल भाबरे मिसी चंती तांको अति निकट रो जानि चंती तांकर व्यक्तित्व संपर्क रे मध्ये आपण अवगत अछंती तो से केते जो रहितिल डाउन टू अर्थ तांकर जो व्यवहार थिला तांकर समस्तंक पई उच्च नीच काहाको देखु नथिले वर्तमान मो से अधिक आलोचना करबा को वरिष्ठ संवाददाता अक्षय साहू वर्तमान आम से जोड़ी होचंती सिक्त अक्षय साहू आपण को स्वागत करि आलोचना को आपण देखंतु रायसेना हिल को जाई से केबे भूली नाहांती एवं निज अंचल लोक फोन करुछंती सुख दुख पचारि बुझुछंती आमे देखिदिलु जेतेबेले से राज्यपाल थिले सेतेबेले पीपुल्स गवर्नर भाबरे मध्ये परिचित थिले एबे राष्ट्रपति हेबा परे मध्ये तांकु समस्त कहउछंती से होचंती पीपुल्स प्रेसिडेंट यहाँ को आम ओडिशा पई गर्व एवं गौरवर कथा कहि परिबा कि ता सहित तांकर जो रिफ्लेक्ट होउची तांकर जो नेचर डाउन टू अर्थ कोन कहिबे आपण देखो तो गतकाली संपर्क मध्ये आलोचना करथिले आज पुणे थरे आपनकर टेलीविजन रे आलोचना होची निश्चित भाबरे एटा गुटे समस्त स्वागत करिबे भलो पाइबे कारण जने महिलांकर कथा आपण आलोचना करछंती तांकर महन्यतार कथा आलोचना करछंती तांकर लोकमानक सहित जो मधुर माधुर्य संपर्क रहिछि से संपर्क आलोचना करछंती निश्चित भाबरे जेतबेले मनुष्य माने बड़ पद पदन को चाली जानती सेतबे अधिकांश समय देखा जाए सेमाने निजर बिटा माटी को भूली जाती से जोटी मनुष्य जाई थांती से कथा सेमाने पासरी जाती किंतु द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र रे आपण देखिबे से तांकर बिटा माटी को झुरु चंती तांकर से जो लोकमानक सहित से बढ़ी चंती जो अंचल रे बढ़ी चंती ता कथा से भाळेनी करूचंती बात से कथा भाबुचंती एवं सेटिकार भलो मंद कथा से रायसीना हिल रही बुझुचंती निश्चित भाबरे जे गोटे मनुष्य जेतेबेले तार उच्च सोपान को चली जाए जेतेबेले पुणी सेठू देखे जे जो माटी जाइछि से माटी किबळी अछि से मनुष्य किबळी अछंती सेतरे ताकर महन्यता प्रतिपादित हेताय एवं ए द्रौपदी मुर्मू का क्षेत्र रे हम मध्य एक्जेक्टली देखुछु जो मनुष्यत्व जो महन्यता थाए से मनुष्यत्व से महन्यता को से पुणी थरे उपस्थापित करूचंती मानव समाज आगे एवं तांकर एई बली महनीय कार्य जे उत्तर पीढ़ी को निश्चित वर्तमान पीढ़ी एवं उत्तर पीढ़ी को निश्चित निश्चित भाव ये प्रेरणा देवा उत्तर पीढ़ी को आप एकदम गुरुत्वपूर्ण कथा कहते डॉक्टर शिरीष चंद्र जेना अच्छा अवसरप्राप्त अध्यापक डॉक्टर जेना आप देखु से होती तेजस्विनी से होती प्रेरणादायी और से होती नारी शक्ति से किभली भाव एक संघर्ष निष्ठापर और जो सफलतार कहानी आम समस्ते जानिछे पाठ पढ़ी स्वावलंबी होगा जो आदर्श थिला जेतेबेले से फोन करथिले निज अंचलर लोकंकु पिलांको पाठ पढ़ा कथा पचारि बुझिथिले केमती पिला पाठ पढुछंती पिलांको कहबा मन लगाई पाठ पढ़िबे एवं पिला मनकर दायित्व नेउथबे ये गोटे निश्चित भाव में गोटे भलो संदेश दउछि गोटे भलो वार्ता दउछि हम समाज को में कहि परिबा डॉक्टर जेना डॉक्टर शिरीष चंद्र जेना आपण स्वाधीनता हाँ हाँ मो सुनी पारुछि मो भी कहूछि एई जो वार्ता द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैला परे ए जो सुंदर वार्ता समग्र भारत समाज को देइचंती से भारत समाज एई वार्ता को नेई उत्तर पीढ़ी को गढ़िबा दरकार कारण उत्तर पीढ़ी जदि जो पूर्व पीढ़ी थिले से पूर्व पीढ़ी जेतेबेले भारतवर्ष स्वाधीनता लाभ कला गांधी विचार करुथिले गांधी को विचार रे थिला सबुठारु तृणमूल स्तर मनीष जणे आसी जेतेबेले शासन गादी अख्तियार करिवो सेतेबेले सेई शासन गादी अख्तियार करुथिबा मनीष तार तृणमूल स्तर रे जेते सांग साथी अछंती जो परिवेश अच्छी से परिवेश को भूली जिबार कथा नुए से सांग साथी को भूली जिबार कथा नुए एवं सेमान को नहीं जे समग्र भारत वर्षर एक सुंदर पुनर्मूल्यांकन करबा दरकार सुंदर चित्र आंकिबा दरकार जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जेतेबेले राष्ट्रपति थिले सेतेबेले से मतो खूब माने अति साधारण परिवार रु आसी थिले एवं साधारण परिवार रु आसी सीए
तांकर परिवार तांकर आत्मीय स्वजन तांकर गाँर लोक सेमानकु डाकी राष्ट्रपति भवन बुलाइथिले एवं राष्ट्रपति भवन बुलेइबा अवसर रे से जो सरकार टंका जहाँ खर्च हैला से तांको दरमारु मध्य माइनस करि देइथिले। एई भली उदाहरण द्रौपदी मुर्मू को आगरे अछि। आमे जानिचु द्रौपदी मुर्मू जने महिला आदिवासी जने मातृशक्ति सी अतीत रे बहुत कार्य करि आइचंती। पिलामानंकु जेतेबेले पाठ पढ़ौथिले विद्यालय रे सेतेबेले पिलामानंकु निज पिला भली से आचरण करुथिले एवं से हिंदी पढ़ौथिले इंग्रजी पढ़ौथिले उड़िया भाषा पढ़ौथिले। तेणु भाषा को जानिबा पाई पिलामानंकु एवं पिलामानंक भितरे बांटिबा पाई तांकर जो ज्ञान गारिमा थिला ताकू सीए सबु प्रकार लगेई देइथिले। सेई मनीष आपण भाबुनांती रायरंगपुर गोटे आदिवासी अध्युषित सब डिविजन उड़ीसार ताकू आमे पछुआ सब डिविजन बोली कहि पारू किंतु सेउठु जाई रायसीना हिल ले से पदार्पण करिसंती। काहेकि ना निजर कार्यदक्षता निजर शक्ति निजर जो चेतना से निज चेतना बल से एते बड़ पदवी रे अधिष्ठात्री होइचंती। जेतेबेले से झारखंड गवर्नर थिले राज्यपाल थिले से देखंतु झारखंड राज्यपाल हला परे से भुवनेश्वर रे वास करि नांती से रांची रे वास करि नांती से टाटा रे वास करि नांती से वास करिचंती निज गाँ निज रायरंगपुर सहर रे निज रायरंगपुर को फेरी आछंती 2015 रु 20 ये गवर्नरशिप सरीगला तापरे निज गाँ को से फेरी आसिले। आपण माने विश्वास करिवे नाही से गाँ को एपर्यंत विद्युत खुंटी मध्य बसी नथिला। सी जेतेबेले रायसीना हिल की गले सेतेबेले विद्युत विभाग तांको गाँ को पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन करिछि एवं मो पूर्ववर्ती वक्ता कहूतिले सी जड़े एभली शक्ति महिला शक्ति थिले मातृशक्ति थिले एवं सी मध्य जड़े बड़ परिवेशविद थिले। परिवेश को जिमिति स्वच्छ सुंदर करिया पाई 1997 रु 2000 एई जो 3 वर्ष सी उदाहरण सृष्टि कले रायरंगपुर म्युनिसिपालिटी रे उपाध्यक्ष भाव में थिले सेतेबेले उदाहरण तैयारी कले बोली मनोवृत्ति तांकु देइछे को स्वतंत्र परिचय बदल जाइथिबा समय देइछि बड़ उपहार डॉक्टर जेना डॉक्टर कृष्णचंद्र आज्ञा निश्चित भाव में परवर्ती समय आपण पाखकु फेरिबी। डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र आपण तो तांको सहित बेस भल भाव में मिसिचंती अति निकटरू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आपण बेस भल भाव में जानिचंती मध्य सरल मिष्टाभाषी निष्कपट एवं परोपकारी थिले। से गरीबों को से बहुत भल पाती साहाय्य पई आगे आसंती जीवन से अनेक किछि हराइछंती किंतु केबे से हारि नाहांती। तांको जीवन शैली संपर्क रे आपण कोन कहिबे? देखंतु तांका जीवन रे से बहुत कष्ट पाइछंती सेमती नुहे जीवन काल भितरे आपण जानिथिबे तांको दुई पुत्र को मध्य से हरैछंती तांका स्वामी को भी हरैछंती सबु हरैला परे मध्य से भगवान को विश्वास रखिकी जनता जनार्दन को सेवा रे रहिछंती। ए कथाटा प्राय समस्त को जणा अछि। तो भल पाइबा आ भक्ति करिबा आदर करिबा एटा तांकर गुटे स्वभाव आ चरित्र। विभिन्न समय रे मु देखिछि जेतेबेले से गवर्नर मध्य थिले झारखंड रे आमे मते झारखंड को जाइछु से निज जो माने आत्मीय धरे आमे आसीछु आमे कोन खाइबु कोठी रहिबु से व्यवस्था मध्य से निजे बुझिबा को चेष्टा करथले पचारुथले। जेतबे सेठु पळि आसिले रायरंगपुर रे मध्य रहिले सल्ला परे आमे विभिन्न समय रे जेकी तांको भेटिछु भेटला परे आदर रे बाबा भाई आसिले बस कोन खाइबो कोन खाइछो माने छोट छोट कथा प्रति ध्यान एवं विभिन्न लोक पुराणा लोकंकर पचारिबा तांको विषय बुझिबा समान केमती अछंती किए को टाइप रे अछंती ए सब को मध्य तांको ध्यान विशेष करी देखुन जेतेबेले से राष्ट्रपति घोषणा हेगला आमे पहुंचिबा मात्रे चटकिनी मिठा उठे खय बाबाई का आगो मिठा खुआ कोई मिठा खय माने एते आदर एते भल पाइबा एते श्रद्धा सेटा प्राय बहुत कम देखिबा को मिले। जो गुटे एते बड़ स्थान रे पहुंची गला परे एते बड़ स्थान रे बसिला परे एते श्रद्धा और आदर
এটা বহুত কম লোক পাখে থাকে বিশেষ করে এতে গোটে রহিলা এতে রাষ্ট্রপতি সে নির্বাচিত মানে ঘোষণা হয়ে গলা শপথ গ্রহণ উৎসবে পছকু ভুলি যাতে কিন্তু দ্রৌপদী মুর্মুଙ୍କ ক্ষেত্রে पूरा विपरीत देखा मिली से निज माटी को भूली ना से निजर गाँ को भूली ना संपर्क को भूली ना प्रति कथा को से मन रखिंट से तो से होती नारी शक्ति से होती तेजस्विनी एवं से होती समस्त प्रेरणा आग को संपर्क में आम आलोचना करवा कि वर्तमान समय हो नहीं गोटे छोट ब्रेक। कटक पॉक्सो कोर्ट विचारपति सुभाष बिहारी संदेहजनक मृत्यु घटना आसी नुआ मोड़ सुभाष को हत्या करा जायछि बोली कांदी कांदी अभियोग करिसेंती मां तुलसी और सान भाई हत्या अभियोग ने कटक मरकतनगर थाना रे एतला देइछंती तुलसी हत्या पछरे पारिवारिक विवाद किंबा धन संपत्ति कारण होइथाई पारे बोली संदेह करुछंती सुभाष को मां जाजपुर जिला भुवनेश्वर गां विष्णुचरण बिहारी और तुलसी बिहारी बड़ पुओ सुभाष जाजपुर कलश ढियो गां श्रीवत्स रायंकर झियो अपराजिता विवाह करथिले सुभाष मरकतनगर थाना रे मां तुलसी दायर करिथिबा एतलारे दर्शा जायछि जे विवाहर 3 वर्ष पर्यंत सुभाष और पत्नी अपराजिता घर सह सुसंपर्क रखिथिले तापरे रखिले नाही तुलसी अभियोग करिसेंती जे सुभाषकर पत्नी और मझिया ससुरंकर पुओ सर्वजित मिसी सुभाष को मानसिक निर्यातना देउथिले आत्महत्या नुहे पत्नी अपराजिता और सालक सर्वजित मिसी सुभाष को मारी देइछंती बोली अभियोग करिसेंती तुलसी मृतदेहर विभिन्न स्थान में दाग रहिबा एवं गाँ को मृतदेह न पठाइबा घटना हत्या संदेह को अधिक घनीभूत करिछि बोली एतलारे दर्शाइछंती तुलसी मरकतनगर थाना अधिकारी कहिछंती पूर्वरु अपमृत्यु मामला सहित एही एतला मिसाई तदंत कराजिबो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसिबा परे तदंत आगेइबो। आमर मृत विचारपति सार माँ तुलसी देखिए स्वागत तेज लोके कहते द्रौपदी मुर्मू को पीपुल्स प्रेसिडेंट कहीं से लोकों अनेक किसी करने रही तो बड़ कथा हो लोके जिते आपण अनेक किसी आशा रखिंट केवल मयूरभंज नुहे पूरा ओडिशार उन्नति नजर रही बोली द्रौपदी मुर्मू कहते स्पष्ट भाव में जमापड़ी से ओडिशा को केते भल पाती से निजर जन्ममाटी को केते भल पाती से निज अंचल लोकों को केते भल पाती श्रीयुक्त अक्षय साहू मुझे आपण पाक आसवाक चाहिए आप देखूँ राजनीति पॉलिटिकल कैरियर संपर्क में आम आलोचना करवा राजनीति थिला लोकों सेवा राजनीति कौन हो पारे किंतु द्रौपदी मुर्मू लोकों सेवा जमती आप देखो रायसीना हेलु जमती फोन कले निज अंचल लोकों कथा जमती पचारि बुझिले निष्ठापर लोकों सेवा गोटे नुआ परिचय देछि कि काउंसिलर मंत्री राज्यपाल राष्ट्रपति ये यात्रा जेतिकी संघर्षमय सेतिकी रोचक ये सारा भारत वर्ष को गोटे भल संदेश जाइछि पीपुल्स प्रेसिडेंट। बिल्कुल देखंतु जो केते जन प्रेसिडेंट को आपनकर देश मन रखिबो ता भीतर तांकर ना भी मन रहइबो आपनकर एपीजे अब्दुल कलाम देखंतु से भी आपनकर पीपुल्स प्रेसिडेंट थिले तांको भी लोक मन रखिचंती एथि पाइ जे से जेतबे से पदवी रे असीन हेले सेतबे देखिबे से पदवी को आपनकर पदवी रे जो गरिमा रहिछि ताकू रक्षा करबा सहित से भाबिले नाही जे से पदवी भीतर आबद्ध होकर रही राष्ट्रपति थिला बेले से देखिए विभिन्न यूनिवर्सिटी को गस्त करी कॉलेज को गस्त करी विभिन्न प्रतिष्ठान को गस्त करी सेठी पिला मानक सहित मिसुथिले एवं तांकर जो अध्यापक थिला बेले से जमती शिक्षादान दउथिले सेमती शिक्षादान दउथिले छोट छोट पिला मानक सहित मिसिकरी तांको विभिन्न कहानी आकार में विभिन्न साइंस स्टोरी इत्यादि बुझौथिले नीतिबाणी भी सिखौथिले सेतले ओडिशा भी आसीथिले तो सेथि पाई आपनकर एपीजे अब्दुल कलाम जो त्यागपुत जीवन सी राष्ट्रपति थिला भितर राष्ट्रपति भवन से सुउच्च चारिकांत भितर बाहर के जेमति जनसाधारण सहित मिसुथिले जो गोटे छाप छाड़ी गले तो छवि छाड़ी गले सेथि पाई लोक ताको झुरुचती एवं द्रौपदी मुर्मू मध्य से बड़ी
से राष्ट्रपति भवन रो से जो सूच आपनकर प्राचीर भीतर रहिले मध्य ता सेठु बाहर करी से जो प्रयास करूचंती लोक मान सहित मिसिबे जो संपर्क तकर रहिता लोक मान सहित से संपर्क को बजाय रखबे से टाइम आसंता दिन रे पुणी आलोचना करा व्यस्त बहुल से समय मध्य समय बाहर करी जेतेबे निज लोकंक सहित कथा होइचंती ताहा समस्त को ये आश्चर्य मध्य करिछि। जगदानंद जोड़ी होइचंती अध्यक्ष सीवाईएसटी तथा वरिष्ठ समाजसेवी चिक्त जगदानंद आपन को स्वागत करिछि आलोचना को। आपण देखंतु राष्ट्रपतिंकर माटी प्रति जो मोह रहिछि संपर्कंक प्रति जो भल पाइबा रहिछि सेति पे लोके कहउचंती से होइचंती पीपल्स प्रेसिडेंट। आपण देखंतु छिना राइसरा हिल सिना अछंती द्रौपदी मुर्मू किंतु निज माटी को झुरुछंती निज गाँ को झुरुछंती निजर संपर्क को झुरुछंती एवं आपण निश्चित भाव में आमे समस्त जानिछे आदिवासी को उन्नति पई से बहुत किछि कार्य करिछंती। आपण केमती देखंती? देखंतु वर्तमान तो हमर माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आरंभ करछंती तांकर इनिंग्स एवं ए यात्रा और बहुत दिन हमकु तांकु भी रहिबा को पड़िबो एवं आमे देखिबार अछि जे तांकर केमतिका से ए दायित्वटा को तुलौछंती किंतु नेता हंतु बा राष्ट्रपति हंतु गोटे दायित्व जतोले मिले सेतोले दायित्व रे बहुत लोक आबद्ध हो जाती एवं बहुत लोक जतोले पावर कॉरिडोर भीतर को चली जाती से माने निजर बहुत जिनस भूली जाती एवं जतोले सरी जाए तांकर कार्यकाल तापर हठात मने पड़े जे मु मोर कोठु आस्तिली मोर लोक किए मोर ज्ञाति किए बरा मोर कुटुंब किए मो अंचल कौन मो अंचल समस्या कौन किंतु वर्तमान सुधा हमर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो नजर देखैछंती से संपर्क रे रहिछंती सेटा हमकु सुनिक भारी भल लागुची एवं जाहेले राष्ट्रपति बा नेता हंतु से तो हमर मनीष जने से हमर भीतर जने भौणी एवं हमरी राज्यर जने जने वरिष्ठ जाऊ कहवा स्टेट्समैन तेणु तांकर राज्य प्रति टिके रहिबा दरकार मान जो तांकर जो गोटे आग्रह अछि आम राज्य प्रति बा तांको अंचल प्रति एटा मु भाबुची एटा बहुत स्वाभाविक एवं द्रौपदी मुर्मू केबे अस्वाभाविक नेत्री नथिले से जने स्वाभाविक एवं अति साधारण गोटे नागरिक हिसाब रे साधारण नेत्री हिसाब रे थिले। मोर मने अछि से जो झारखंड राज्यपाल थांती एठी भुवनेश्वर रे थियोसॉफिकल ऑर्डर सोसाइटी रो तांको संवर्धना करिया पय डकाई थाए एवं सेही सभा रे मु सभापतित्व करथाए से आस्थांती झारखंड रु सतबळे राज्यपाल थांती अति सरल एवं आम राज्यपाल भी आस्थांती ओडिसा रो राज्यपाल दि जण को मु देखिला भितरे मु फरकटा देखुताए तांकर एवं आमर सतबळे जे राज्यपाल थिले तदानंतन भितरे बहुत आकाश पाताल फरक थाए एवं ये सब कथा गोटी गोटी की पचार थांती एवं केते दिन रहिबे केबे फेरी जिबे रांची जतबळे हम पचारलु से कहले एवं सेतबळर जहा अवस्था में देखिछे एवं वर्तमान भी जहा देखुछे बेसी फरक हेनी तेबे राष्ट्रपति दायित्व रे गुडे जिनस रे बांधी जानती समस्ते सकाळु संध्या जाए विभिन्न प्रकार औपचारिकता अछि बहुत फॉर्मालिटी अछि देशर जेते राष्ट्रपति बहुत लोक बहुत अंचलरू तांकोठु आशा करंती किंतु राष्ट्रपति दायित्व कर्तव्य एवं गोटे सीमा सरहद भीतर थाए बहुत जिनस चाहिए भी से करवा भारी मुश्किल हम किंतु जेहेतु राष्ट्रपति से जदि निजर आग्रह